आज के जो हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है वो ग्रीन केमिस्ट्री पे है, जो कि राहुल प्रेजेंट करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं राहुल के पास। राहुल बेटा, नाउ यू मे प्रोसीड विद योर। हाँ जी बेटा। Okay, sir. Good morning, sir, and my all friends. First of all, thank you for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Rahul, student of class BSc Non-Medical 6M from Dayal Singh College. My topic about green chemistry. Here is topic: don't drink water under developed countries. Don't breathe air in the developed countries. Sir, next. What is the solution for pollution? Dilution. No, dilution is not a solution for pollution. अब बात आ गई, what is dilution? Dilution is the action of making a liquid more dilute. और उसके बाद word so the real solution for pollution is green chemistry. Green chemistry is the utilization of set of principles that reduces or eliminates the use or generation of hazardous substances in the design, manufacture and application of chemical products. Hazardous substances का मतलब है खतरनाक products या खतरनाक chemicals. सर नेक्स्ट करना. Green chemistry is about reducing excretions, waste, materials, hazard, risk, energy, cost. Why do we need green chemistry? Chemistry is undeniably a very prominent part of our daily lives. Chemical developments also bring new environmental problems and harmful unexpected side effects, which result in the need for greener chemical products. Its famous example, pesticide DDT. Now move on next. Green chemistry looks at pollution prevention on the molecular scale and is an extremely important area of chemistry due to the importance of chemistry in our world today and the implication it can show on our environment. The green chemistry program supports the invention of more environmentally friendly chemical process which reduces or even eliminates the generation of hazardous substances. This program works very closely with the 12 principles of green chemistry. Here is the 12 principle of green chemistry. First, prevent waste. Second, maximize atom economy. Second, less hazardous chemical synthesis. Fourth, safer chemicals and products. Fifth, safer solvents and reaction conditions. Six, increase energy efficiency. Seven, use renewable feedstocks. Eight, avoid chemical derivatives. Nine, use catalysts. 10, design chemical and product to degrade after use. 11, analyze in real time to prevent pollutions. 12, minimize potential for accidents. And move on next. It is better to prevent waste than to treat or clean a waste after it is formed. जो chemical process होता है उसमें बहुत कम waste होता है. Chemical process, no waste. And polylactic acid product, it is a polylactic acid production. This is commonly used as biodegradable thermoplastic polyester derived from corn starch, undefined dextrose, lactide, lactic acid. और इसकी कुछ फर्मेंटेशन है और पॉलीमर मॉडिफिकेशन इज डिवाइड इन 5. इससे 5 प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि पॉलीमर ग्रेड्स, फाइबर, फिल्म, बोतल, वोवन और नॉन वोवन एटसेट्रा. एंड नाउ हाइड्रोक्सी एल्कोनेट्स पीएचएस प्रोडक्शन है. सनलाइट है जो क्रॉप पे पड़ेगी, मान लो कोई गन्ना या कोई भी क्रॉप होगी, उसके बाद उससे हमें शुगर सोल्यूशन मिलेगा और शुगर सोल्यूशन से जो हमें कुछ फर्मेंटाइजेशन मिलेगी उससे हमें पीएचए प्रोडक्ट मिलेगा और उस पीएचए से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जो कि CO2 एंड H2O से बायोडिग्रेडेशन है. एंड मूव ऑन नेक्स्ट. द मेजर यूज ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री: एनर्जी, ग्लोबल चेंज, रिसोर्स डेप्लीशन, food supply, toxic in the environment. And first, energy. Green chemistry will be essential in developing the alternatives for energy generation, photovoltaic fuel cells, bio-based fuels, etc., as well as continue the path toward energy efficiency with catalysis and product designing at the forefront. And next, global change. Concerns for climate change, oceanic temperature, stratospheric chemistry, etc., can be addressed through the development and implementation of green chemistry technologies. And next, resource depletion.
Renewable resources can be made increasingly viable technologically and economically through green chemistry. Its example: biomass, carbon dioxide, nanoscience, solar or waste utilization. And next, food supply. While current food levels are sufficient, distribution is inadequate, agriculture methods are unsustainable, future food production intensity is needed. Green chemistry can address many food supply issues. नेक्स्ट फूड सप्लाई के बारे में है, ग्रीन केमिस्ट्री इज डेवलपिंग पेस्टिसाइड which only affect target organisms and degrade to innocuous byproducts, fertilizers and fertilizer adjuvants that are designed to minimize uses while maximize effectiveness. Method of using agricultural wastes for beneficial and profitable uses. Toxic in the environment. Substances that are toxic to humans, the biosphere and all the sustains it are currently still being released at a cost of life, health and sustainability. One of a green chemistry's greatest strength is the ability to design for reduced hazard. Conclusion है इसका, green chemistry not only a solution to all environmental problems but the most fundamental approach to prevent pollution. Think globally and act locally. We do not inherit the earth from our parent, we borrow it from our children. So please think globally and act locally, and thank you for your patience. Complete होगी सर? हाँ जी बेटा. Again thank you very much बेटा राहुल for this nice presentation. हो सकता है शायद फॉन्ट आपको उतने अच्छे से ना नजर आए हों जो आपने शायद डिजाइन किए होंगे उसमें, बट टेक्निकल इश्यूज की वजह से कई बार हम लोगों को डील करना पड़ता है. और ग्रीन केमिस्ट्री नो डाउट बहुत ग्रीन केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है इस, और एट प्रेजेंट जो आज की सिचुएशन है उसकी डिमांड है ये कि ग्रीन केमिस्ट्री पर आजकल बहुत काम चल रहा है और होना भी चाहिए. काफ़ी रिसर्च हो रही है इसके ऊपर, और ये क्योंकि आपने जैसे बताया कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जा सकते हैं. ऑब्वियसली बात है, जो जनरली जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं बायोडिग्रेडेबल नहीं होते तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचाते हैं. तो डेफिनेटली हमारी पॉलिसी यही रहती है, या गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रहती है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जिससे कि बेनिफिशियल हो और वो बायोडिग्रेडेबल हो, ताकि वो इजीली डिकम्पोज हो जाएं, दोबारा अर्थ में मिल जाएं, या उनका कोई ना कोई एक्सट्रैक्शन इजीली अवेलेबल हो. तो अगेन थैंक यू वेरी मच राहुल बेटा फॉर दिस नाइस प्रेजेंटेशन. थैंक यू सर, आपका भी सर, आपने प्रेजेंट करने का मौका दिया. वेलकम बेटा.